I'm Seema Mami. My efforts are meaningless if the stars are not aligned. If you recognize this auntie from a meme, then you are aware of the new Netflix show called Indian Matchmaking. This show is closer to reality than any other show I've watched. You may be shocked कि 2020 में भी ये सब चल रहा है, पर अगर आपने कभी भी इंडियन न्यूज़पेपर्स के मैट्रिमनी सेक्शन को खोल के देखा है तो दिस शो विल नॉट बी अ सरप्राइज टू यू। ये बकवास हमारे देश में बहुत समय से चल रही है, बहुत। What might be surprising is that these are Indians based out of the US. So even if they're from a supposedly more evolved place, क्या करें, दिल तो हमारा अभी भी ऑर्थोडॉक्स ही है। Don't worry, I'm not bashing the show in this video, but I'm bashing the very culture that the show is based on. This show is run by a matchmaker called myself Seema from Mumbai. I'm Seema Mami. I'm a matchmaker for many families. Bangkok, Hong Kong, America. It's just a word of mouth. But it's not like Seema auntie is not self-aware. She knows that people come to her with checklists. She knows that she will have to become the Amazon equivalent of marriages when people say और दिखाओ. After watching the show, मेरी तो जान ही निकल गई यार. अगर हमने कभी अपने प्रोफाइल ऐसे मैचमेकर्स को दे दी तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी बॉस. Because the cutoff criteria is too high for this university. Cutoff number 1. हाइट जी, अगर लड़का 6 फुट का है तो द गर्ल कान भी 5'5" ना. नहीं 5'3" से नीचे तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है जी. अब कल को पंखे पे मकड़े का जाला अटक गया तो द गाय नीड्स टू बी टॉल ना, बट नॉट टू टॉल, अदरवाइज आवर डॉटर विल फील इंफीरियर. कट ऑफ नंबर 2. स्किन टोन. सीमा जी, वी वुड रियली प्रेफर अ फेयर गर्ल बिकॉज ब्यूटी डजंट लाई इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. ये बातें तो रेडिट पे अच्छी लगती है. या ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, पर अगर वो स्किन गोरी होगी तो नथिंग लाइक इट. कट ऑफ नंबर 3. इफ यू आर नॉट फिट और स्लिम और हैव ग्रेट एब्स और ग्रेट कर्व्स, तब तो आप शादी भूल ही जाओ, क्योंकि हम शादी थोड़ी करवा रहे हैं. हम तो मॉडलिंग एजेंसी के ऑडिशंस ले रहे हैं और आप फेल हो चुके हो. आप अगर अच्छे नहीं दिखोगे तो हाउ एल्स विल यू बी अ ट्रॉफी वाइफ और अ ट्रॉफी हस्बैंड. कट ऑफ नंबर 4. रिच एज The guy needs to earn the same or more than the wife because otherwise it's just embarrassing. And the girl doesn't need to worry about earning much. उसको हम pocket money दे सकते हैं. We'll never let her feel the need to grow up or be independent. Promise. Cut off number 5. You have to be a cutter believer in horoscope, हाँ? Because if the stars don't align, then matchmaker की सारी effort तो waste हो जाएगी ना यार. Personality और compatibility आपकी नहीं, stars की देखी जाएगी. Cut off number 6. हेलो, कास्ट कैसे भूल गए आप? You have to be from pure Desi Aryan roots because even if you're in the US, how can you forget your sanskars? And if you're from Guyana, then I'm very sorry, आपकी तो शादी नहीं हो सकती. Cut off number 7. एज. शादी करने की ना एक परफेक्ट उम्र होती है. कमोडिटीज के सेंस में समझे तो एक्सपायरी डेट. अगर आप उसे एक फ्रेश एज ब्रैकेट में फॉल नहीं करते तो आपकी वैल्यू कम होते जाती है. द यंगर यू आर, द मोर टाइम यू हैव टू बेयर किड्स. I can go on and on with this list because so can they. The best of education, the girl should be flexible so she can help around the house, the guy should be good in bed but the girl should be a virgin, they need to be from the best of families and have good upbringing. I mean, what the hell does that even mean? Basically, you need to be a young, purebred, upper class, fair guy or girl who has conformed to unrealistic beauty standards and is financially loaded. You have to be a full package in order to get married. क्योंकि हमारे देश में शादी नहीं, कमोडिटी शॉपिंग होती है. अगर आप में एक भी खोट निकला तो आपकी पूरी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो सकती है बॉस. और मार्केट में बहुत सारा नया माल और बहुत सारे नए डीलर्स और पेरेंट्स हैं. इट्स सो फनी. दहेज हटा के हमने कौन से बड़े वोकनेस का पहाड़ तोड़ लिया अगर अल्टीमेटली हमें ब्राइड और ग्रूम पे ऑनलाइन शॉपिंग के फिल्टर्स लगाने थे. पर दहेज भी कौन सा ही हटाया. बट दैट्स द थिंग अबाउट द शो. It's merely portraying the harsh reality. At one point, Seema auntie says that men in India would have felt threatened if their wives were lawyers. Now, as much as we might outrage about that in our own echo chambers, the unfortunate fact is that yes, Indian men would have felt threatened to marry someone who is so successful and educated. In fact, most Indian men are feeling threatened as I'm saying these very bitter truths because हमारी ego हमारी IQ से भी छोटी होती है. If you don't believe me, please check out the comments on this video. But interestingly, the show also says that women are no better. They also want certain qualities in the guy and won't budge. The show is less about gender issues and more about a problematic culture in general. ऐसा लग रहा है matchmaking is just a flea bazaar where you can bargain, negotiate and window shop as much as you like. And to think that this is being done by the most affluent and educated of people. Maybe that's why it's not a surprise that most of the couples in the show are no longer together. As problematic as it may be, Seema auntie addresses that for Indians, there's no love marriage or arranged marriage. There's just love marriage and marriage. Arranged goes without saying. And that's where matchmaking as a culture steps in. I have no idea when we'll reach a point जब हम ये सारी practices abolish कर दें. पर जब तक ऐसा चलता रहेगा, it seems really tough to get married unless you're as perfect as Hrithik Roshan. Let me know what you think in the comments below, and for more such videos, subscribe to India Times.